Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुचो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मते परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई के रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक आउ पोलराइजेशन वेक्टर विषय रे पढ़िबा। तो देखो आमे जेमती देखिला जे गोटे डाइलेक्ट्रिक को आमे दुई भाग रे डिवाइड करि परिबा गोटे हला पोलर डाइलेक्ट्रिक आ गोटे हला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके सो प्रथमे जदि गोटे डाइलेक्ट्रिक रो मॉलिक्यूल्स गुडा पोलर नेचर ताले इन द एब्सेंस ऑफ external electric field these molecules will be randomly oriented so that the net dipole moment of this dielectric will be equal to 0. Okay, similarly in case जदि ये डाइलेक्ट्रिक रे मॉलिक्यूल गुडा नॉन पोलर ताले एबे मध्य नेट डाइपोल moment of this dielectric will be 0 in the absence of electric field. Okay, अच्छा let us now see this figure. देखो ये आम गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंसीडर करिबा which is placed in an external electric field E0 acting along this direction. Okay, and this slab is placed between the plates of a charged parallel plate capacitor. Okay, now we know that in presence of external electric field this will shift the center of gravity of positive and negative charges molecule रो जो अछि in opposite direction. Positive charge गुडा जो डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हेतिबो से डायरेक्शन रे शिफ्ट हेबे आ नेगेटिव चार्ज गुडा तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे शिफ्ट हेबे। ओके तो सपोज एई डाइलेक्ट्रिक टा नॉन पोलर हे थांता ताहले एबे कोन हैला इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू पोलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली जदि डाइलेक्ट्रिक टा पोलर हे थांता ताहले एथिरे जो पोलर मॉलिक्यूल अछि तार जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो शिफ्ट हबो ता सहित से माने जो क्लोज चेन फॉर्मेशन करिथिबे ताकू भी एई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टा ब्रेक कर दबो। ओके सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एटा हमें देखुछु जे एटा तमरो पॉजिटिव प्लेट आड़ को शिफ्ट करूची। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एटा शिफ्ट करूची नेगेटिव प्लेट आड़ को। ओके तो एठी यहाँ द्वारा एबे सब जो मॉलिक्यूल गुडा अछि सेमानक भितरे गुटे अलाइनमेंट क्रिएट हबो। ओके दिस विल रिजल्ट इन अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स along the direction of the electric field which is externally applied. ओके अच्छा पॉजिटिव चार्ज जो अछि मॉलिक्यूल रो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक it will be followed by the negative charge of the adjacent molecule. so देखो एठी जो पॉजिटिव चार्ज एतिकी आमे देखुछु इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ठीक तार आगरे नेगेटिव चार्ज भी अछि ओके एडजेसेंट मॉलिक्यूल रो तेणु करी एई जोते सब मॉलिक्यूल दे आर वेरी मच क्लोज विथ ईच अदर तेणु एई पॉजिटिव चार्ज गोटे मॉलिक्यूल रो सेटा कैंसिल हो जिवो बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तेणु डाई इलेक्ट्रिक भितरे जदि आमे नेट चार्ज देखिबा इट विल बी इक्वल टू 0 कैंसिल हो जिवो सब किंतु एक्सेप्ट नियर द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इट विल बी नॉन जीरो। ओके ए जिनसटा को आमे एठी तळ फिगर रे बुझी परिबा। सो देखो एठी तळ फिगर रे आमे देखि पारुछु टोटल नेगेटिव चार्जेस will be appearing across the surface A. As you can see in this figure these are the total negative charges. Similarly total positive charges will be appearing across the surface B. Okay so ये जो दुईटा surface A और B आसुची which are the opposite faces of the dielectric ये दुईटा surface रे positive और negative charge रो appearance जो होउची ताहा द्वारा गोटे electric field एबे produce हबो which is EP inside this dielectric and note that ये जो EP यारो डायरेक्शन टा
उल्टा अच्छी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 तेणुक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जदि आम बाहर करवा डाइलेक्ट्रिक भितर जो इलेक्ट्रिक फील्डटा obviously it will be reduced. Okay, so the net electric field inside the dielectric will be E equal to E0 minus EP. So आम ए देखा पाइला जे जितेबाला गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आम प्लेस करके रखुचु इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन the strength of the electric field will be reduced. Okay, and this phenomenon of appearance of charges on the opposite faces of a dielectric slab which is induced by external electric field is called polarization. Okay, अच्छा एबे दुईटा चार्ज रो आमे डिस्कशन करिबा गोटे हला फ्री चार्जेस आ गोटे हला बाउंड चार्जेस देखो फ्री चार्जेस माने एटा होची से भलिया चार्जेस जोटा कि ए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रो सरफेस रे रही थाए ओके एंड द सरफेस डेंसिटी ड्यू टू दिस फ्री चार्जेस इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस which is sigma f. Similarly, bound charge mane these are the induced charges on the surface of your polarized dielectric. Okay, these are the bound charges. Similarly, यहाँ पाई surface density is due to these bound charges is sigma p. Okay, अच्छा एबे आमे देखिबा polarization vector. So देखो polarization vector होची actually the induced dipole moment per unit volume of a dielectric is called your polarization vector given by the symbol vector p. Okay, so as per the statement suppose induced dipole moment गोटे dielectric पाई हेगला small pi vector रे आ volume of this dielectric हेगला capital V ताले according to the statement the polarization vector is given by p equal to pi by V. अच्छा ये जो डायपोल मोमेंट को हमें लिखी पारिबा एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस which is nothing but the thickness of the slab. So here p becomes equal to qi d divided by v. Okay, so एटी d हेगला जेमती कहली thickness of the slab. अच्छा ये polarization vector रो डायरेक्शन टा एक्चुअली from negative to positive that is from minus qi to plus qi. आज यदि मैग्नीट्यूड आम ना ये पोलाराइजेशन वेक्टर देन इट इज गिवन बाय p इक्वल टू क्यू आई डी बाय v इन मैग्नीट्यूड ये वॉल्यूम को आम लिखिपर एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड थिकनेस सो a इंटू d होगला सो तले उपरे एबे स्मॉल d कैंसल आउट हो सो दिस पोलाराइजेशन वेक्टर इज नाउ गिवन बाय क्यू आई बाय a सो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया तो या आम लिखिपारा एज सिग्मा p which is the surface density due to the bound charges. Okay, hence the polarization of a dielectric is numerically equal to the surface density of the bound charge. SI unit रे a polarization vector unit है coulomb per meter square as it is the charge per unit area. Okay, thank you.